Assalamu alaikum viewers, I hope you all will be feeling better. Today I am having an important grammar which we are going to start from the beginning. Class 1. In the name of Allah. The first part is beginner. What is beginner? Definition. The first part of an action or activity is called beginner. एक्शन या एक्टिविटी का पहला हिस्सा बिगिनर कहलाता है. इंग्लिश. अब व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? मीन ENG मीन. इंग्लैंड LISH मीन्स लेश. लेश मीन पीपल. डेफिनेशन. द लैंग्वेज of England now used in many countries throughout the world. That was definition. Now it is introduction. It is an international language. It is made by England people. This is spoken and understood in all over the world. ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इसको इंग्लैंड के लोगों ने बनाया है और ये पूरी दुनिया में बोला और समझा जाता है. इंग्लिश स्टैंड फॉर E मीन इंग्लैंड, N mean national, G mean great, L mean language, I mean international, S mean science, H mean history. Now, what is language? Definition. The source of communication is called language. It is a communication system between human beings. बातचीत का ऐसा जरिया जिस पर हम बातचीत एक दूसरे के साथ कर सके उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पश्तो, हिंदको एटसेट्रा. ग्रामर. व्हाट इज ग्रामर? डेफिनेशन. द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. लैंग्वेज का पूरा सिस्टम या स्ट्रक्चर, इसको हम ग्रामर कहते हैं. इंट्रोडक्शन. द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. यानी कि रूल्स और रेगुलेशन किस चीज का? लैंग्वेज का. क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है. अब अल्फाबेट क्या है? डेफिनेशन. A set of letters or symbol used in fixed order to represent the sound of a language is called alphabet. There are 26 alphabets in English language. It has been divided into 3 parts. One is called vowel letters, second called semi-vowel letters, third one is called consonant letters. Vowel letters. Definition. A letter of alphabet representing a speech of sound in which the mouth is open and the tongue not touching the top of mouth or the teeth. ये एक ऐसा अल्फाबेट है जो साउंड रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें हमारा माउथ ओपन होता है और जुबान माउथ के ऊपर के हिस्से को टच नहीं करता. इंट्रोडक्शन क्या है? द साउंडफुल लेटर इज कॉल्ड वावल. एग्जाम्पल इज A, E, I, O and U. Number 2. Semi-vowel letters. Definition. A speech sound intermediate between a vowel and consonant is called semi-vowel letter. Introduction. They are not vowel but they act like vowel. This way we call it semi-vowel letter. We have 2 semi-vowel letters, W and Y. Example. Y yellow, where, year. The third one is consonant letters. Definition. The letter of the alphabet
representing a speech sound in which the breath completely or partially obstructed is called consonants. Introduction. The soundless letters called consonants. We have 19 consonants letters. For example, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. Letter. What is letter? Definition. A character representing one or more than sound in speech is called letter. Introduction. Any symbols of the alphabet is called letter. For example, A, B, C, D, E, F to Z. Now what is word? Definition. A group of letters that makes a meaning is called word. Introduction. A group of alphabets that gives us complete meaning and sense is called word. For example, class. Class gives us complete meaning. Class is class. Pen. Pen gives us complete meaning. Play. Write. Sentence. Definition. A set of words that is complete in itself conveying a statement is called sentence. Introduction. It is a group of words which has subject and verb plus object and gives us complete meaning is called sentence. ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद हो और हमें मुकम्मल मानी दे, इसको सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले क्रिकेट. आई टीच इंग्लिश. आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट. आई वॉच टीवी. शी washes dishes. Subject. Definition. The performer of an action is called subject. अमल करने वाला subject कहलाता है. A word in a sentence naming who or what performs the actions of a verb is called subject. Introduction. The doer or the performer of an action is called subject. It is the part of a sentence that we talk about it. For example, we play cricket. Here we is subject. He teaches English. Here he is subject. Verb. Definition. It is a word which tells us about an action, state or existence is called verb. ये एक ऐसा वर्ब है जो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, जो हमें एक्शन के बारे में बताता है, हालत के बारे में बताता है और पोजीशन यानी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है. Introduction. A verb used to describe an action, state or occurrence. For example, we play cricket. Here play shows an actions. I was sick. Here was shows us state. Fida is in the class. It here is shows existence. Object. Definition. It is the part of a sentence that receive action from subject. जुमले का एक ऐसा हिस्सा जो सब्जेक्ट से एक्शन रिसीव करता है. A noun acted on by a transitive verb on by a preposition. Introduction. The receiver of an action is called object. The affected part of a sentence is called object. For example, we play cricket. यहाँ पर क्रिकेट क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है. किसका एक्शन रिसीव करता है? वी का एक्शन रिसीव करता है. He teaches English.
clause. अब clause क्या है? Definition. A distinct part of a sentence with its own subject and verb is known as clause. Introduction. It is a group of words which contain subject and verb but doesn't give you complete meaning is called clause. यानी कि ऐसा जुमला या एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो मौजूद होता है किस चीज़ पर, सब्जेक्ट और वर्ब पर मौजूद होता है पर हमें कंप्लीट मानी नहीं देता, उसको क्लास कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी प्ले, हम तो खेलते हैं पर क्या खेलते हैं ये पता नहीं चलता हम क्या खेलते हैं. ही टीच, वो तो टीच करता है पर ये पता नहीं चलता कि ये क्या टीच करता है. फ्रेज. Definition. A small group of words forming a unit is called phrase. Introduction. A group of words which doesn't have subject and verb. ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो उसको फ्रेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास, ऑन द रोड. यहाँ पर ना कोई वर्ब मौजूद है ना कोई सब्जेक्ट मौजूद है. प्रेडिकेट. Definition. The whole part of a sentence without subject is called predicate. सब्जेक्ट के अलावा जो हमारे पास सेंटेंस होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? A group of words which contains verb and object is called predicate. For example, we play cricket. He teaches English. क्योंकि ही और वी क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के अलावा जो हमारे पास बकाया सेंटेंस होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. Thanks for watching and watch this video again and again, then you will learn very well. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching video. Thank you.